So, how are you? I hope you all are preparing yourself for civil services. So, आपकी कैसी प्रिपरेशन जा रही है सब्जेक्ट की टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये थोड़ा थ्रेटिकल है बट इजी है, ठीक है। सो इन सब के डिटेल्स लेक्चर्स इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इसका जो है कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है इतनी ज़्यादा अमाउंट में डाटा। सो दैट्स वाई मेरी कोशिश होती है कि मैं हर पॉइंट को जो है वो जस्टिफाई करूँ, एक्सप्लेन करूँ और फिर आपके साथ जो है वो अपने नोट शेयर करूँ जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के वक्त यूज़ किए थे, ठीक है। सो जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे ये वाला सब्जेक्ट टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, सो लास्ट वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी डीएमसी भी शो करूँगी कि मेरी इसके सब्जेक्ट के जो है वो कितने स्कोर था। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एंशिएंट सिविलाइजेशन, कि एंशिएंट सिविलाइजेशन अपना किस तरह रोल प्ले करती है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट के अंदर। सो इसका सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है इज़ दैट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बन प्लानिंग। अर्बन प्लानिंग की हिस्ट्री क्या है, किस तरह ये शुरू हुआ, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन किस तरह स्टार्ट हुई, फिर क्लासिकल की तरफ किस तरह गई, किस किस पीरियड में क्या क्या काम होता रहा, किस तरह सोसाइटी चेंज हुई, एवोल्यूशन हुई, कल्चर क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वक्त के साथ साथ ऐड होती रहीं और फिर जो है वो हिस्टोरिकली जो है अपबिल्ड होती रही। So urban planning has a rich history that reflects the evolution of societies, cultures and technologies. So first अगर हम देखें एंशिएंट सिविलाइजेशन में इसका क्या रूल है, तो द रूट ऑफ अर्बन प्लानिंग कैन बी ट्रेस बैक टू एंशिएंट सिविलाइजेशन सिटीज़ लाइक मेसोपोटामिया, ठीक है। ये आप सर्च करें तो 3000 BC जो है वो तकरीबन यही टाइम है जब ये प्लान होना शुरू हो गई। हैज़ प्लान ले आउट विद स्ट्रीट्स एंड पब्लिक स्पेसेस। तब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि गलियां होनी चाहिए, घर जो हैं, ठीक है, और पब्लिक के लिए थोड़ी स्पेस भी होनी चाहिए, इतने साल पहले। So the Indus Valley civilization around 2500 BC is known for its advanced urban design, ठीक है। आप देखें बुक, जब भी आप जोग्राफिया हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो आपको इंडस वैली जो है उसका नाम सर फहरिस्त नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वो इतने साल पहले भी जो है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड प्लानिंग थी, ठीक है। हर चीज़ वहाँ पर थी, गलियाँ कि किस जो एक्स्ट्रा वेस्ट है उसको हमने किस तरह डिस्पोज करना है, गलियाँ किस तरह हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ की जो है वो अपनी अपनी एडवांसमेंट पे था इतने साल पहले। सो फीचरिंग ग्रिड पैटर्न्स एंड ड्रेनेज सिस्टम sorry, as seen in cities like Mohenjo-daro. Second is classical antiquity. In ancient Greece and Rome, urban planning became more sophisticated. The Greeks introduced the concept of agora, a public space, ठीक है। एगोरा ग्रीक के अंदर पब्लिक स्पेस को बोलते हैं एगोरा। सो उन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई और फिर उन्होंने कहा कि जो हिपोटामियंस हैं ये प्लान कर रहे हैं विच ऑर्गेनाइज सिटीज़ इनटू ग्रिड पैटर्न and the Roman advanced engineering techniques, creating roads, educates, and public buildings that emphasize functionality and aesthetics. Third is medieval period. During the Middle Ages, urban planning was influenced by feudalism and church. जब मेडिवल का एरिया चल रहा था तो फिर ये जो जागीरदाना सिस्टम है वो अरूज पर था और चर्च का सिस्टम। पास्ट टाइम में काफ़ी साल पहले जो है तकरीबन 2000 BC पहले क्या कहा जाता था कि जो चर्च चला रहा है, ठीक है, ज़्यादा क्रिश्चियनिटी थी तो क्रिश्चियंस का जो ऑनर होता था, चर्च का जो ऑनर होता था, उसे ही माना जाता था कि वही जो है वो सारा रूल्स बनाएगा, उसी का ही जो है वो ऑर्डर फॉलो किया जाएगा और फिर वही सब कुछ जो है वो देखेगा। सो cities were often built around castles and cathedrals with narrow winding streets. The layout was less planned and more organic, reflecting the social structure of the time. Fourth is Renaissance and Baroque. It brought a revival of classical ideas, leading to more structured urban designers. Cities like Florida and Paris saw the creation of grand public spaces and events. So the Baroque period emphasized symmetry and grandness as seen into the design of cities like Versailles. नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई, ये अभी हम फर्स्ट बाय स्टेप पढ़ रहे हैं कि किस तरह हिस्ट्री जो है वो इवॉल्व हो रही है। सो अब हम 3000 BC से शिफ्ट हो गए हैं 19th सेंचुरी पे। द 19th सेंचुरी मेक्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द अर्बन प्लानिंग ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
Cities expanded rapidly, leading to overcrowding and poor living conditions. This prompted public health reform and the development of zoning laws. Notable figures like E. Banzer Howard purpose garden cities as a solution to urban issue. Sixth one is modernism and the 20th century. The early 20th century saw the rise of modernist planning principles focusing on fundamentally and efficiency. Le Corbusier and Frontenac Conference advocated for design that prioritized automobile traffic and open spaces. So the post-World War II era brought suburbanization and the creation of extensive highway system. Seventh is contemporary urban planning. Today, urban planning is increasingly focused on sustainability and inclusivity and smart growth. Planners aim to create livable cities that prioritize public transportation, green space, and community engagement. Concepts like new urbanization emphasize walkability and mixed zone development. सो नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग ऑफ हिस्टोरिकल टाउन्स इन द वर्ल्ड. सो इसको भी हम साथ साथ देखेंगे कि किस किस तरह किस किस इलाके के अंदर एडवांसमेंट आ रही है वक्त के साथ साथ. आज हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे डिफरेंट हिस्ट्री में, फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान टाउन इन यूरोप. फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो के अंदर हम नाइल वैली रीजन को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे. So now move forward toward the planning of historical towns in the world. The planning of historical town around the world showcases a variety of cultural thoughts, cultural influences and urban design principles. So पहले अगर हम बात करें रोम इटली जो है वो अब बात करें तो यहाँ पे रोमन्स ने क्या किया. रोमन्स अर्बन प्लानर रिफ्लेक्ट द लॉन्ग हिस्ट्री विद लेयर्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द रेनेसांस. The city is characterized by the iconic structures like the Colosseum and the Pantheon, along with a network of roads that radiate from the Roman, from the medieval and Renaissance period, introduce palaces and public spaces, creating a vibrant urban environment. Second is Machu. Machu is a Pikachu. So Peru के अंदर ये वाक़या है. The Incan city is renowned for its sophisticated dry stone construction and terraced agricultural system planned in harmony with the surrounding mountains. Machu Picchu's layout reflects the Inca deep connection to nature. The town features temple, residential area and agricultural terrace, all integrated into the landscape. Third is Fez, Morocco. The medieval Fez is all of the world's but preserved medieval cities. So it's a narrow winding streets and are designed for pedestrian traffic with a layout that emphasizes social interaction and community. The town is known for its intricate architecture, including mosques, madrasas, and souks, all the contributing to a vibrant urban fabric. Fourth one is Kyoto, Japan. It is known for traditional wisdom art, wooden architecture, and shrine gardens. Kyoto was the imperial capital for over 1,000 years. The city's layout reflects the principle of Shinchi with the emphasis of harmony with nature. Historical districts like Gyeon preserve the traditional street caps, showcasing the city's cultural heritage. Fifth is Charleston, South Carolina, USA. It is founded in the 17th century. Carolina or Charleston is known for its well-preserved historical district features like cobblestone street and antebellum architecture. So the planning of the town emphasizes a grid layout with public squares and gardens that promote community interaction. The preservation of its historical character is a key aspect of urban planning here. Now here are some examples of planned town in Europe. First is Palamura, Italy. It's designed in the late 16th century and a store-shaped fortress town. Palamura was intended by military defense. Its layout features a central square surrounded by three centric rings of streets with a wall forming a star shape.
The town reflects Renaissance ideals of urban planning, emphasizing symmetry and order. So second is Vienna, Austria. The ring store is a Vienna is an example of a planned urban development from the 19th century. It was created as a part of the city's expansion and featured gravelled bowers lined with imperial buildings, parks, and mountains. The planning aimed to connect various historical sites and create a cohesive urban environment. Third is Copenhagen, Denmark. The area of Overstar is a modern planned neighborhood that began development in early 2000 century. It is characterized by innovative architecture and sustainable urban design. The planning include green spaces, bike paths, and public transportation, promoting a high quality of life while integrating residential, commercial, and recreational areas. Fourth is Nantes, France. The town of Nantes has undergone significant urban planning efforts, particularly in the redevelopment of its waterfront and the creation of a Lady Nantes district. This area features modern architecture and a public spaces showcasing a blend of historical preservation and contemporary design. Fifth is Tampere, Finland. Tampere is known for its industrial heritage and has been planned with a focus on sustainability and community. So the city's development includes green spaces, waterfront areas, and a mix of residential and commercial zones, reflecting modern urban planning principles while preserving its historical character. So these planned towns in Europe demonstrate a range of approaches to design, urban design from historical fortifications to modern sustainability development, each contributing to the cultural and architectural landscape for the continent. Each town has its own story and a unique character. So Asians that contribute to the rich top story of European urban development. That's how European countries are well developed and well equipped. So last one is Almere, Netherlands. It is a planned city in a four-length province of the Netherlands. It was created in the 1970s on retained land and features distinct residential districts, green spaces, and focus on sustainability innovation. So, till that, today we have completed the topic of historical background of town planning and throughout over the world. So, in our next video, we will do Nile Valley region, which is located in nearby Nile River. So, till that, be with me, and if you have any query, you can ask in comment section. Subscribe my channel and stay happy. Allah Hafiz.